Today, I'll be talking about heuristic functions, and we'll discuss few more examples of heuristic functions with regards to uh, the A star search, and we'll talk about some of the properties of heuristic functions that are required. Before moving on, um, I'll just recap uh, the that what A star algorithm is just a small recap of the search algorithm before we start with the the discussion on heuristic functions. Okay, so suppose you have this the search tree that has the start state as S and has the goal state as G. The values which are given on each of these links is what you call as the the path cost of moving from one node to another node. So from moving from S to B, the cost is 2. Moving from B to F, the cost is 1. Moving from S to A, the cost is 3. And then this table here is representing the heuristic cost of each of these nodes. So the heuristic cost of S, for example, is 30. And that means this heuristic cost of this particular node is 13. This would mean that using some heuristic, the distance between or the estimate of the cost between the start node and the goal node is 13. Similarly, node A has a heuristic cost of 12. That means that the cost of A with respect to G is 12. The cost of A with respect to the start node is 3. Okay, so the total F cost of A would be the addition of the G value, which is 3, plus the heuristic cost, which is 12, and that comes out to be 15. So the total heuristic cost is 15 for node A. Similarly, the heuristic cost for B will be 2. The F cost of B will be 2 plus 4, which is 6. Okay. And now if you are at the start node S, then you have two choices. Either you go and evaluate A, or you go and evaluate B. Therefore, obviously the F cost of B is lower compared to the F cost of A. Therefore, you will evaluate B in this particular scenario. And then if you will expand B further, that means that the children of B will be expanded and they'll be evaluated. So here F of E will be the total path cost from S to E, which is 5, plus the heuristic cost of E, which is 8. Okay, so that comes out to be 13 in this case. Okay, so the total F cost of E is 13, and the total F cost of node F is 2 plus 1, 3, plus the heuristic cost, which is 2, right? So this would be 5. So obviously the next node that you will be visiting is F. Okay. And then you expand F further. So you have I and you have G, right? So the total cost of reaching G, the heuristic cost is 0, and the total path cost is 2 plus 1 plus 3, which is 8. Okay, so the total F cost
of reaching G is 8, and that is your primarily your goal. So you have reached your goal at this point in time. Okay, so even though so you have got a path from your start node to your goal node with a total cost of 8. Okay, so the paths that were not expanded further is the one which has got A, is this particular through node A, and the other unexpanded path is through E. And of course, you will not be expanding these paths any further. The reason is that you have already got a path to your goal which has a value of 8, which is less than the partial cost that has been achieved so far, which is less than 13 and 15. So now, of course, if you further expand them, the cost, F cost, would further increase. Therefore, you will primarily discard these paths. ठीक. Now suppose अगर ऐसा होता, so I'll just give you an example. Suppose ऐसा होता कि आपने यहाँ इस path के through आप पहुँचे हैं. So you have got this path as the total path, which is, sorry, this is 7, not, so this is 2 plus 1, 3 plus 3, which is 6 in this case. Okay, sorry, this is not 8, this is 6. Okay, so this would be 2 plus 1, 3 plus 3, which is 6. Right, not 8. So just correct that. Okay, suppose अगर आपके पास कोई एक और path होता और आपने उसको partially expand किया होता यहाँ तक. Okay, let me just see if there is any question on this. Okay. For F, calculation for F, I'll just repeat that. So calculation for F would be 2 plus 1. So the total path cost is 3 plus the heuristic cost. The heuristic cost of F is 2, and that would be plus 2. So the total cost comes out to be 5. Okay. So the total cost of F comes out to be 5. Right. Acha. Okay. Great. So suppose अगर आपके पास कुछ और paths यहाँ पे होते, so let's just consider a few other paths. ठीक है. और remember B की जो आपने B का जो total F cost आपने निकाली, that was 2 plus 4, which is 6. ठीक है. Suppose यहाँ पे भी इसके कोई S के साथ कुछ S से कुछ और paths भी निकलते और इसकी कॉस्ट जो थी, लेट सपोज यहाँ पे हमने अज्यूम किया था कि यहाँ पे कैलकुलेट किया था कि इसकी पाथ कॉस्ट 15 है. ठीक है, 3 प्लस 12 15. तो ऑब्वियसली आपने बी को एक्सपेंड किया. यहाँ पे हो सकता है कुछ नोड्स लेट से डायरेक्टली आपके पास कुछ और नोड्स यहाँ पे इसके चिल्ड्रन होते एस के, और इसकी कॉस्ट जो थी वो लेट से इसकी कॉस्ट 7 आ रही होती, द टोटल एफ कॉस्ट. और यहाँ पे कॉस्ट लेट से 14 होती, और और दिस इज 2 plus 1 3 plus 3 6. अच्छा ठीक है, सो यू हैव ऑलरेडी एक्सपेंडेड दिस. और यहाँ पे आपके पास लेट से कॉस्ट 5 आ रही होती. ठीक है, और लेट से तो फिर आप ऑब्वियसली ये नोड एक्सपैंड करते. ठीक है, आप बी को एक्सपैंड करने के बजाय इस पाथ पे मूव करते, बिकॉज यहाँ पे इसकी टोटल एफ कॉस्ट जो है वो 5 आ रही होती.
एंड लेट्स सपोज कि आप टोटल एक्सपैंड करते करते आप गोल तक पहुंचते, और इस पाथ के थ्रू आपको जो गोल मिल रहा था वो लेट्स से आपको टोटल कॉस्ट आपके पास जो इस पाथ के थ्रू मिलती, वो लेट्स सपोज कि वो 8 होती थ्रू दिस पाथ, ठीक है। तो टोटल एफ कॉस्ट ऑफ रीचिंग योर गोल थ्रू दिस पाथ फर्ज करें वो 8 होती। तो अगर ये 8 थी, तो देन इन दैट केस you will compare this f of g, which is 8, to all unexpanded paths so far. So you have one unexpanded path जिस पे cost 14 है, which is greater than 8, तो आप इस path को तो straight away discard कर देते। Similarly इस path को भी आप straight away discard कर देते, क्योंकि यहाँ पे cost इसकी 15 आ रही, ठीक है। Even the partial path cost 15 आ रही, लेकिन इस path को the partial cost is 7, which is less than 8. So इसको आप further और यहाँ पे the partial cost जो है along via B वो भी 6 है, which is less than 8. तो आप इस पाथ को और इन दोनों पाथ्स को अभी आपने डिस्कार्ड नहीं करना था। You would have expanded B further इन अ होप कि हो सकता है इस पाथ के अलॉन्ग अगर आप मूव करें तो आपके पास जो टोटल पाथ कॉस्ट आए टू जी दैट वुड बी लेस देन 8, एंड एग्जैक्टली दैट हैज हैपेंड। तो अगर आप इसको की एक्सपैंड करते हैं फर्दर, तो यू विल एंड अप हैविंग द टोटल पाथ कॉस्ट एज 6 व्हिच इज लेस देन 8, ठीक है। और यहाँ पे अब आपके पास पाथ कॉस्ट 6 है, अनएक्सपेंडेड पाथ्स आपके पास सिर्फ एक ही बचा था which is this, and और इसकी जो partial cost आ रही है that is 7 which is greater than 6, so you'll now discard this, ठीक है। So you so the final thing is that you'll discard any path only if the total path cost of a given path is less than even the partial path cost of another path on the frontier. तो अब इसमें 6 से कम कोई ऐसा पाथ नहीं है जो कि अवेलेबल हो, तो इसलिए you will basically discard all the other paths and you will keep this path as the final path with you, right? Okay, so that was an example of a star algorithm. There is another example given here, so I'll leave this example as an exercise for you, but you have to keep only one thing in mind, that is that a star is an optimal search algorithm. That means that it would always give you a path that has a least f cost, okay, always, right? No matter what happens under a condition, and that condition is that your heuristic has to be consistent as well as admissible. So now we'll see कि heuristic का design आपने कैसे करना है और admissible heuristic से क्या मुराद है. That's the next thing that we'll be discussing. Okay, so let me share a new set of slides with you. And they would be on heuristic functions. Okay, so is there any a question so far on A star? अगर कोई question है तो I'll be happy to answer. सर एक्सप्लेन कर सकते हैं कि ये हमें वैल्यूज कहाँ से पता चले कि ये ए के ये 13 वैल्यू और इसके पाथ के 12 वैल्यू है? ओके, सो उसके लिए आपने एक ह्यूरिस्टिक फंक्शन डिफाइन करना, ठीक है। जैसे अगर आपने वो नेविगेशन प्रॉब्लम का हमने देखा था, तो उसमें स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस हमने एक ह्यूरिस्टिक फंक्शन डिफाइन किया था, और उस ह्यूरिस्टिक फंक्शन के थ्रू हमने
ये values determine करना, right? So you have to have a heuristic function to calculate those, to those things, to calculate those values. तो वो heuristic function कई दफ़ा problem में आपको given होता है, कई दफ़ा आपने खुद determine करना है कि heuristic function क्या है, and this is exactly the thing that we'll be discussing uh, in just now. ठीक है, तो just wait, hopefully you will get an answer to this question, and then we'll discuss later on कि ये जो evaluation है, heuristic evaluation, ये value आती कहाँ से, so we'll just see that in a while. ठीक है, so generally आपको ये heuristic function दिया होता है for a given problem, लेकिन कुछ problems के लिए well, for all problems you can always determine this function. So it's a function, you have to evaluate for every node this function, and it's such a function कि आप before you actually plan your search, before you actually conduct your search, you can evaluate either on the run or even beforehand given node की heuristic evaluation. अच्छा, यहाँ पे क्वेश्चन है इब्राहिम का कि फ्रंटियर से क्या मुराद है. फ्रंटियर is primarily all those nodes on your search that you can evaluate further. So let's say कि मैं I can give you an example for that. Okay. So for example, this is your start node, ठीक है, so this is the definition of the frontier. So this is your start node, और यहाँ से इसके कुछ children जो हैं वो you have these children, ठीक है. So you start with your start node, और आप इस node को expand करते हैं, ठीक है, और इसको expand करते हैं तो you get let's say node 1, node 2 and node 3, ठीक है. So you got these 3 nodes here. And now you'll expand one of these nodes, ठीक है. So now initially जब आपने S को expand नहीं किया था, only S was present, आपने S को evaluate किया, so your frontier contained only S. Frontier is primarily the present, the nodes at present that are that you need to expand further in order to extend your search. जब आपने S को expand किया, that means कि उसके children को आपने अपने data structure के अंदर डाल दिया, तो then your frontier has now moved to this level, ठीक है. So इसके ऊपर आप या 1 को expand करेंगे, या 2 को expand करेंगे, या 3 को further expand करेंगे after evaluating. तो आप 1 को evaluate, let's say 1 को evaluate करते हैं, और अगर 1 आपका goal नहीं है, तो then you basically expand it further, ठीक है. तो आपके फ्रंटियर के ऊपर आप जब आपने 1 को एक्सपेंड कर दिया, उसके चिल्ड्रन आपने आप पॉसिबल एवेल्युएशन आपने रखी, तो योर फ्रंटियर वुड बी कंसिस्टिंग ऑफ दीज नोड्स, ठीक है. तो अनएक्सपेंडेड नोड्स इस वक्त जो प्रेजेंट अनएक्सपेंडेड नोड्स हैं, बट दोज नोड्स व्हिच कैन इमीडिएटली बी एक्सपेंडेड और एवेल्युएटेड. तो अब आपके पास नोड लेट्स से नोड 4 आ जाता है और नोड 5 आ जाता है. तो नाउ माय फ्रंटियर वुड कंटेन नोड 4, 5, 2 एंड 3. तो इन चारों में से मैं किसी एक को एक्सपेंड कर सकता हूँ फर्दर या एवेल्युएट कर सकता हूँ. सो दिस इज व्हाट इज मेंट बाय फ्रंटियर. सो सपोज मैं नेक्स्ट जो है वो 2 को एवेल्युएट करता हूँ, और 2 को एवेल्युएट करता हूँ, तो 2 विल बी after evaluating 2 will be out of my frontier, will no more be part of my frontier, क्योंकि I've already evaluated this node. और इसका child जो है वो मैं ऐड कर देता हूँ. तो अब मेरे पास जो frontier होगा that would be 4, 5, 6 and 3, ठीक है. So all those nodes that are right at the front, that means that can be evaluated further immediately, would consist of the frontier of my search. I hope this answers your question, Ibrahim. Acha, now
नाउ लेट्स टॉक अबाउट ह्यूरिस्टिक फंक्शंस, क्योंकि ए स्टार के अंदर या बेस्ट फर्स्ट सर्च के अंदर द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज टू लुक एट द ह्यूरिस्टिक एवेल्युएशंस, ठीक है। तो उसके लिए आपको ह्यूरिस्टिक फंक्शंस को डिफाइन करना है। सो लेट्स टेक दिस एग्जाम, फॉर एग्जाम्पल हमने यहाँ पे एक गेम है विच इज टिक टैक टो गेम। सो यू हैव टू चूज वन ऑफ दीज मूव्स। फर्ज करें आप ब्लैंक बोर्ड से स्टार्ट करते हैं और आपके पास ये पॉसिबल मूव्स आ सकती हैं। लेट्स सी के तीन, ऑल्दो कि इससे ज्यादा पॉसिबल मूव्स हैं, बट लेट्स जस्ट कंसिडर कि आपके पास यही सिर्फ तीन पॉसिबल मूव्स हैं। या आप क्रॉस इधर लगाते हैं, या आप क्रॉस इधर लगाते हैं, या आप क्रॉस जो है वो सेंट्रल ब्लॉक के अंदर लगा देते हैं। तो लेट्स से कि ये आपके पास एक गेम है, दिस इज अ टू प्लेयर गेम, और इसके लिए हमने ये देखना है कि कौन सी मूव बेहतर है, इन तीनों में से कौन सी मूव हमें सेलेक्ट करनी चाहिए। एंड ऑब्वियसली इफ यू आर अप्लाइंग ए स्टार और बेस्ट फर्स्ट सर्च, इसके लिए आपको ह्यूरिस्टिक एवेल्युएशन चाहिए, और ह्यूरिस्टिक एवेल्युएशन के लिए आपको कोई ह्यूरिस्टिक फंक्शन चाहिए, क्योंकि वो वैल्यू आपको चाहिए ना। फर्ज करें ये नोड है आपके पास, तो इस नोड की कोई ना कोई ह्यूरिस्टिक एवेल्युएशन आपको चाहिए, और फिर उसमें जब आप पाथ कॉस्ट ऐड करेंगे तो यू विल बेसिकली बी गेटिंग योर एफ कॉस्ट। तो एफ कॉस्ट निकालने के लिए ह्यूरिस्टिक एवेल्युएशन चाहिए। तो इस केस में क्या हो सकता है ह्यूरिस्टिक? एनीवन कैन यू थिंक ऑफ अ फंक्शन जिसको मैं यूज करके नोड्स को एवेल्युएट कर सकूं, इन इन मूव्स को एवेल्युएट कर सकूं कि इन मूव्स में से सबसे बेहतर मूव कौन सी? जी, ओके, जी इब्राहिम। Sir, it could be any move that gives you greater possibilities of winning. ओके, Like, agar we have more crosses in a row, yeah, diagonally, हाँ, so maybe that can have less heuristic cost. ओके, बट इस केस के अंदर आपके ह्यूरिस्टिक क्या हो सकता है? आई हैव टू हैव अ वैल्यू फॉर दैट ना। इस केस में क्या ह्यूरिस्टिक हो सकता Sir, value नहीं पता, but I think they'd be equal. नहीं, so if we have more chances in one of the है? बिल्कुल moves, ठीक है। they'll be different. सो द क्वेश्चन वुड बी कि हाउ वुड यू कैलकुलेट दोज चांसेस? ओके, जी उमर, उमर ने हाथ उठाया था, उमर सुहेल ने, और फिर अहमद है, अहमद महमूद। सर नंबर ऑफ रोज या डायगोनल्स जो कि उस पॉइंट से बन सकती हैं। ओके, सो व्हाट अहमद इज सेइंग कि आप यहाँ से लेट्स से कि इस मूव को, इस नोड को मैंने एवेल्युएट करना है, तो जस्ट यू कैन काउंट द नंबर ऑफ विनिंग लाइंस, पॉसिबल विनिंग लाइंस। तो एक विनिंग पॉसिबिलिटी हो सकती है कि आप डायगोनली क्रॉसेस इस तरह से लगा दें। एक विनिंग लाइन ये हो सकती है कि आप हॉरिजॉन्टली तीन क्रॉसेस यहाँ पे लगाए जा सकते हैं, और एक विनिंग लाइन ये हो सकती है कि आप वर्टिकली एक एक यानी क्रॉसेस आ जाएं। तो तीन क्रॉसेस इस तरह से अगर आपके पास आ जाएं तो देन देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ विनिंग, या हॉरिजॉन्टल आ जाएं तो देन देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ विनिंग। सो यू सिंपली कैलकुलेट द टोटल नंबर ऑफ विनिंग लाइंस। अच्छा, और इस केस के अंदर द टोटल पॉसिबल विनिंग लाइंस आर primarily just given here 1 2 3 and 4, और यहाँ पे विनिंग लाइंस आपके पास लेट से तीन आती हैं, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे जो ह्यूरिस्टिक मैंने जो आपको भी बताया है, दैट ह्यूरिस्टिक is something which you call is type of heuristic which you call maximizing heuristic। अच्छा, अभी तक जो एग्जांपल्स हमने देखे थे वो मिनिमाइजिंग ह्यूरिस्टिक्स, ठीक है। मिनिमाइजिंग ह्यूरिस्टिक का मतलब ये है कि आपकी जो ह्यूरिस्टिक कॉस्ट है वो रिड्यूस करती है एज यू आर मूविंग टुवर्ड्स योर गोल, ठीक है, एंड दैट्स व्हाट यू कॉल एज अ मिनिमाइजिंग ह्यूरिस्टिक। अच्छा, कुछ सिनेरियोज के अंदर आप मैक्सिमाइजिंग ह्यूरिस्टिक को भी यूज कर सकते हैं। दैट मीन्स कि आपकी जो ह्यूरिस्टिक कॉस्ट है दैट
you choose a node that has a higher heuristic value. और अगर आप ये सिनेरियो यूज करते हैं, इस तरह का ह्यूरिस्टिक डिफाइन करते हैं जिसमें हायर ह्यूरिस्टिक वैल्यू इज बेटर, तो ऐसे ह्यूरिस्टिक को आप मैक्सिमाइजिंग ह्यूरिस्टिक कहते हैं। तो इस केस के अंदर आपने वो नोड चूज करना है या वो मूव चूज करनी है जो आपको मैक्सिमम विनिंग लाइंस आपको दे सके। तो इस केस के अंदर दिस टाइप ऑफ ह्यूरिस्टिक विल बी कॉल्ड अ मैक्सिमाइजिंग ह्यूरिस्टिक। ठीक है, मैक्सिमाइजिंग ह्यूरिस्टिक। सो इसमें आप यू डोंट सेलेक्ट अ ह्यूरिस्टिक दैट हैज अ लोअर वैल्यू, यू सेलेक्ट अ मूव दैट हैज अ हायर ह्यूरिस्टिक वैल्यू। तो ऐसी ऐसी पॉसिबिलिटीज भी हो सकती हैं। तो इस गेम के अंदर आपने एक नोड आपने ऐसा चूज करना है which gives you the maximum winning lines. So this type of heuristic would be called a maximizing heuristic. The rest is exactly the same. बाकी notion इसमें ये होता है is exactly the same। जो भी search आप लगाएंगे, best first search लगाएंगे या A star search लगाएंगे, best first search अगर आप लगाते हैं इसके अंदर the only difference will be between the minimizing heuristic search and the maximizing heuristic search would be in case of a minimizing heuristic आप वो नोड या वो मूव चूज करेंगे जिसकी ह्यूरिस्टिक कॉस्ट कम है, सबसे कम है। ठीक है, दैट फॉर एग्जांपल जो हमने एरियल डिस्टेंस लिया या स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस बिटवीन नोड्स लिया, तो उसमें ऑब्वियसली दैट्स अ मिनिमाइजिंग ह्यूरिस्टिक, क्योंकि आप जो नेक्स्ट नोड सेलेक्ट करेंगे उसमें आप लोअर डिस्टेंस वाले नोड को सेलेक्ट करेंगे, लोअर डिस्प्लेसमेंट वाले या लोअर स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस वाले नोड को सेलेक्ट करेंगे। इस केस के अंदर, इन दिस केस टिक टैक टो गेम के अंदर जो ह्यूरिस्टिक हमने डिफाइन किया है, नंबर ऑफ विनिंग लाइंस, तो ऑब्वियसली यू विल need a node that gives you maximum possibilities of winning। तो maximum possibilities of winning जो है वो central node आपको दे रहा है। So therefore you will choose this, and इसमें जो heuristic आपने use किया है that is what you call as maximizing heuristic। ठीक है, तो ये थोड़ा सा different है from there। So while you are defining a heuristic, जनरली स्पीकिंग आप मिनिमाइजिंग ह्यूरिस्टिक्स को यूज करते हैं, लेकिन देयर कुड बी सर्टेन सिनेरियोज जिसमें आप मैक्सिमाइजिंग ह्यूरिस्टिक्स भी यूज कर सकें। ठीक है, एक्स इज अच्छा सारा का था द क्रॉस इन द मिडल हैज द लोएस्ट ह्यूरिस्टिक कॉस्ट। ठीक है, लोएस्ट ह्यूरिस्टिक कॉस्ट जो है वो सारा आपने कैसे कैलकुलेट की? लेट्स से ह्यूरिस्टिक मैंने डिफाइन किया था नंबर ऑफ विनिंग पॉसिबल विनिंग लाइंस, तो उसमें आप तो ऑब्वियसली यू विल बेसिकली बी यूजिंग or you will be expanding the middle node। reason for that is कि आपके पास मैक्सिमम विनिंग लाइंस उसमें आ रही हैं। तो यहाँ पे मैंने जो ह्यूरिस्टिक यूज किया है, जो मैं यूज कर रहा हूँ वो मैक्सिमाइजिंग ह्यूरिस्टिक है। आपका आपका जो ये कमेंट है सर मैं मिनिमाइजिंग से कर रही थी। सो मिनिमाइजिंग क्या था? ये कि मिनिमम ह्यूरिस्टिक कॉस्ट हो, मैंने लाइक उल्टे तरीके से किया था जिसमें विनिंग के ज्यादा चांसेस हैं उसकी कम ह्यूरिस्टिक कॉस्ट। लेकिन वो वैल्यू कैसे आई? लेट्स से कि मैं यहाँ पे आई कैन गिव अ वैल्यू हियर एंड आई कैन से दैट द वैल्यू इज 4, क्योंकि इसमें मेरे पास 4 विनिंग लाइंस बन रही हैं। तो आपके केस में क्या था और आपने वैल्यू कैसे निकाल लिया उसकी? सर हाइपोथेटिकल वैल्यूज सोची थी। अच्छा, hypothetical values। So hypothetical values will are not basically allowed, क्योंकि hypothetical नहीं होंगी। They have these values have to have some function which you can evaluate। ठीक है, so you can't really assign a random heuristic value। ठीक है, आप उसके पीछे कोई ना कोई फंक्शन होना चाहिए, कोई ना कोई कैलकुलेशंस उसके पीछे होनी चाहिए, तभी आप अप्लाई कर सकते हैं, अदरवाइज यू कांट डू दिस। ठीक है, you will never get say an optimal path if you are using hypothetical evaluations। ठीक है, so you have to keep this in mind। I hope this is clear। ठीक है, okay, so you are using here a maximizing heuristic, not a minimizing heuristic। तो आप इनमें से वो चूज करेंगे जिसकी heuristic evaluation सबसे ज्यादा है। So while defining a heuristic आप ये भी define कर रहे हैं normally कि ये minimizing heuristic है या maximizing heuristic। ठीक है,
Okay, so you calculate the winning lines and then you can basically define कि क्या है, and again before you actually solve this problem, you have to have this concept of maximizing and minimizing heuristic. So maximizing heuristic ये है कि जैसे ही आप वो नोड चूज करें जिसका maximum heuristic value हो, और minimizing heuristic वो है कि जो ऐसा heuristic जो कि जो प्रेफरेबल नोड आपको ऐसा प्रेफरेबल नोड आप यूज करें जिसकी ह्यूरिस्टिक एवेल्युएशन कम हो, ठीक है। सो इस केस के अंदर हमारे पास जो नंबर ऑफ विनिंग लाइंस हैं वो आप कैलकुलेट कर सकते हैं। सो दिस वाज द नेविगेशन प्रॉब्लम दैट वी वर डिस्कसिंग अर्लियर। तो ट्रैवल सेल्स पर्सन टाइप प्रॉब्लम है आपके पास। तो यहाँ पे आपने स्ट्रेट लाइन डिस्टेंसेस बिटवीन सिटीज लिए हैं। So straight line distances between cities would be a minimizing heuristic because the next node that you'll be selecting that should have minimum straight line distance between your present node and your goal node. तो उस सूरत में नोड एवेल्युएशन यहाँ पे जो आप कर रहे होंगे, जो ह्यूरिस्टिक आप कैलकुलेट कर रहे होंगे, दैट वुड बी मिनिमाइजिंग ह्यूरिस्टिक, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर। अगर इसमें कोई और क्वेश्चन है तो यू कैन ऑलवेज आस्क मी। हियर इज अनदर एग्जांपल व्हिच इज एन 8 क्वीन प्रॉब्लम। 8 क्वीन, ओके, साजिद का कमेंट है, let me just go through this comment and let me just see कि क्या है। So when there is heuristic values are given but not told whether they are min or max heuristic, then which one we assume? अच्छा, when the values are given, you simply look at the way the heuristic values are changing. तो आपके पास लेट से कि जैसे जैसे आप नोड के करीब जा रहे हैं, आपकी heuristic evaluations जो हैं वो अगर कम हो रही और गोल के ऊपर जाके वो heuristic वैल्यू जो है आपकी जीरो हो जाती है, तो then that is definitely a a minimizing heuristic. So goal value h of your goal, if that's zero, and if h of n is reducing as you are moving towards your goal, then it's definitely a minimizing heuristic, ठीक है। तो उस सूरत में या आपको गिवन होगा या आपको बता दिया जाएगा कि the heuristic that you are using is a maximizing heuristic or a minimizing heuristic, ठीक है। So generally when nothing is given, then you can assume कि ये minimizing heuristic, ठीक है। लेकिन there are certain indications, जैसे मैंने बताया कि along a path, if the heuristic cost is reducing from node to node, then it's minimizing heuristic, ठीक। So obviously reduce along a path अगर कर रहा है towards your goal, that means that जैसे ही आप गोल के करीब जा रहे हैं, आपकी वैल्यू heuristic वैल्यू जो है वो रिड्यूस होती जा रही है, और गोल पे जब पहुंच जाएंगे तो heuristic वैल्यू जीरो हो जाएगी। So that's basically an indication of minimizing heuristic. I hope Sajid, this is clear. So let's just take an example of another problem, which is an 8 queen problem. 8 queen problem, I don't know how many of you know about this problem. The 8 queen problem is that you have a grid और उसके ऊपर there are certain queens that you want to arrange, और उनको आपने arrange इस तरीके से करना है कि you don't have any queen on a column that contains more than one queens on a column, in a row or on a diagonal, ठीक है। तो जैसे ये मैं लाइंस ड्रॉ कर रहा हूँ, तो फर्ज करें ये क्वीन मैंने सिलेक्ट की, तो इस क्वीन की जो हॉरिजॉन्टल रो है और जो कॉलम है, और इस क्वीन में से जो डायगोनल्स पास कर रहे हैं, उन डायगोनल्स के ऊपर या उन रोज के ऊपर या उन कॉलम्स के ऊपर कोई और क्वीन ना हो, ठीक है। सो गिवन क्वीन कि जिस 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 रो में, जिस कॉलम में, जिस डायगोनल पे वो क्वीन पड़ी हुई है, वहां पे उस क्वीन के अलावा कोई और क्वीन ना हो। सो इफ यू कैन अरेंज दिस ग्रिड इन अ वे that satisfies this, then the arrangement would be acceptable, otherwise the arrangement will not be acceptable. So for example, यहाँ पे ये जो grid आपको शो है, इसमें if you take this queen here, तो इसकी रो के अंदर, इसके कॉलम में और इसके डायगोनल के ऊपर कोई और क्वीन नहीं है, सिर्फ यही एक क्वीन, ठीक है।
So this would be an acceptable position for this queen. ठीक है. So this is because there are 8 queens on the grid, तो आप इसको 8 queen problem कहते हैं. ठीक है. So if you want to develop an algorithm that searches different arrangements and gives you the possible moves that could lead you to a non-conflicting situation, then again if you want to do it intelligently, तो आपने कोई ना कोई heuristic इसके अंदर calculate करना है. ठीक है. तो ह्यूरिस्टिक कैलकुलेशन के लिए आपको ह्यूरिस्टिक फंक्शन चाहिए. तो इस केस में ह्यूरिस्टिक फंक्शन क्या हो सकता है? मैंने आपको बता दिया, गोल ये है कि आपने एक ऐसी ग्रिड अरेंजमेंट निकालनी है जिसमें किसी गिवन क्वीन पोजीशन के ऊपर किसी रो में, किसी कॉलम में या किसी डायगोनल के ऊपर एक से ज्यादा क्वींस ना. सो व्हाट डू यू थिंक इस केस में ह्यूरिस्टिक क्या हो सकता है? जी जी. मिनिमाइजिंग ह्यूरिस्टिक. यू विल अज्यूम कि हम मिनिमाइजिंग ह्यूरिस्टिक्स की बात कर रहे हैं unless specified otherwise. Okay. Anyone? अच्छा जी. Where the heuristic is the number of coins in the same row, column, diagonal as the one where we want to put our coin. Okay. So तैमूर ने जो बात की है, I think उसमें वजन है, और वो ये है कि you simply find out the number of conflicting positions. कि फर्ज करें given grid के ऊपर आपके पास कितनी coins ऐसी हैं which are in conflict with this goal. ठीक है. और वो जो वैल्यू होगी, इफ यू हैव लार्ज नंबर ऑफ पॉसिबल कॉन्फ्लिक्ट्स. जब मैं कॉन्फ्लिक्ट्स की बात कर रहा हूँ, वो कॉन्फ्लिक्ट का मतलब ये है कि कितनी कोइंस ऐसी हैं जो कि एक ही रो या एक ही कॉलम या एक ही डायगोनल के ऊपर है. ठीक है. which are primarily आपके पास जो है वो number of conflicts generated. So this is what we call as a conflict. So यहाँ पे let's say कि अगर कोई क्वीन यहाँ पे अगर मैं प्लेस कर देता हूँ, तो इस केस के अंदर ये क्वीन और ये क्वीन एक ही रो में, ये क्वीन और ये क्वीन एक ही कॉलम में, then this is on the diagonal. So this queen is basically has conflict with 3 other queens. ठीक है. तो आप पॉसिबल कॉन्फ्लिक्ट्स निकाल सकते हैं, और अगर मल्टीपल क्वींस के साथ कॉन्फ्लिक्ट है तो आप उन कॉन्फ्लिक्ट्स को जो है वो ऐड कर सकते हैं फॉर ईच क्वीन. सो यू evaluate the number of conflicts with each queen and then maybe add them. ठीक. So that could be one of the heuristics. ठीक है जी. Okay, so let's just see. So thank you Taimur. So let's see कि क्या हो सकता है. तो लेट्स से कि यहाँ पे आपके पास ये 3 आपके पास पॉसिबल मूव्स थी. तो यहाँ पे आपके पास दिस इज कॉल्ड द मेन कॉन्फ्लिक्ट ह्यूरिस्टिक. सो यू गो फॉर मेन, यू ऑलवेज, आपने मूव ऐसी सेलेक्ट करनी है जो कि इस एज कॉस्ट को फर्दर रिड्यूस कर दे या नंबर ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स को रिड्यूस कर दे. तो इस केस के अंदर लेट्स से अगर मैं इस सिनेरियो को देखूं, उसमें नंबर ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स कितने आ सकते हैं. सो देयर इज अ कॉन्फ्लिक्ट हियर, देयर इज अ कॉन्फ्लिक्ट हियर, देयर इज अगेन अ कॉन्फ्लिक्ट हियर, there is again a conflict here, and there is again a conflict here. So the number of conflict lines अगर आप कैलकुलेट करें, they are 5. So इस नोड की ह्यूरिस्टिक एवेल्युएशन 5 हो सकती है. इस नोड की ह्यूरिस्टिक एवेल्युएशन जो है, फर्ज करें मैं इस क्वीन को जो है, इफ आई मूव इट टू दिस सेल, अगर मैं इसको
डाउनवर्ड मूव करता हूँ, तो इस केस में नंबर ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स आपके 3 रह जाए, ठीक है। और अगर मैं इस क्वीन को यहाँ से उठा के यहाँ पे रख देता हूँ, तो अब इस केस के अंदर आपके पास नंबर ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स जो हैं वो सिर्फ एक रह जाए, विच इज दिस। सो आपकी एच वैल्यू रिड्यूस हो रही है, जैसे मैं मूव कर रहा हूँ आपकी एच वैल्यू रिड्यूस हो रही है। सो अगर फर्ज करें एक ऐसा सिनेरियो होता जिसके अंदर कॉन्फ्लिक्ट्स लेट से 4 पे रिड्यूस हो जाते और इस मूव की वजह से कॉन्फ्लिक्ट्स जो हैं वो 3 पे आ गए हैं, तो ऑब्वियसली आई विल गो फॉर अ मूव दैट रिड्यूसेस these number of conflicts, ठीक है। So you count the number of queens. We call them attacking queens. Attacking queens, yeah, those queens which are in conflict with each other, and then you can calculate this. So आपने यहाँ पे एक ये main conflict heuristic जो है वो define कर दी, और you use this mean heuristic function. So as you are moving towards your goal, your heuristic value is reducing. Therefore, we'll call this as a minimizing heuristic scenario. ठीक है जी? Okay. Here is another example of a larger scale. Now we have the 8 puzzle problem. 8 puzzle problem के अंदर जो है वो heuristic functions जो हैं, probably we had this discussion earlier also. लेकिन इस केस के अंदर क्या हो सकता है? एक heuristic मैं आपको बता देता हूँ, और वो heuristic ये है कि the number of misplaced tiles. फर्ज करें आपकी start state जो है वो ये है, which is given here. So this is your start state and this is your goal state. You simply compare your present state, start state, or your present state with your goal state, और आप simply calculate कर लेंगे number of misplaced tiles कितनी है। तो इस केस में number of misplaced tiles कितनी है? Let's say कि अगर आप ये देखें कि is there any tile which is in place? Probably not. There isn't any tile which is in place. So all the tiles are misplaced in this particular case. Okay. So the heuristic evaluation of this start node would be 8. All 8 tiles are misplaced. Okay. So that is one heuristic. There could be other heuristics also. Okay. Heuristics are not unique. I mean, you can have multiple heuristics. Or wo heuristics jo hote hain, they could be of different types. So can you think of any other heuristic? इस 8 पजल प्रॉब्लम के लिए जी जी उमर। सर आई थिंक हम सारे रोज को देखेंगे ये मिनिमम नंबर क्या आ सकता है इन सारों में, तब ये ऐसे कैलकुलेट भी हो सकता है कि ऊपर से सबसे मिनिमम और फिर सेकंड बिगेस्ट फिर थर्ड बिगेस्ट, ऐसे शायद। और ये दोबारा से आई मीन इसको कैलकुलेट करके बताएं कि जैसे कि ये पहला रो है ना 1 + 2 = 3 की सबसे मिनिमम वैल्यू होगा इस सामने, फिर 3 + 4 + 5 इसका सबसे मिनिमम वैल्यू होगा, फिर 6 + 7 + 8 की ये अच्छा मिनिमम वैल्यूज बस हो सकते हैं कि ये 5 नहीं हो सकता, ये 7 ये ग्रेटर देन नहीं हो सकता इसके, तो हम ऐसे okay मूव कर okay सकते हैं। okay okay so you are saying what you are saying is and that is something which is I mean worthwhile to evaluate कि आपके पास यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 2 है, so if you add 1 and 2 together so the total sum would be 3 in this case, और यहाँ पे भी आपके पास आ रहा है और यहाँ पे भी आपके पास आ रहा है, so if the total sum in row number 1 let's suppose is greater than 3, much greater than C, so you find out the difference between these two, ठीक है, and then see कि ये क्या, and that could be an indication कि आप अपने goal से कितने दूर हैं। Yes, that's a possibility, ठीक है, you can actually try to do that. जी इब्राहिम। Sir, to find out how far every tile is from its goal, can we not use the Manhattan function also? जी you can use Manhattan distance. Manhattan function, बिल्कुल Manhattan function use कर सकते हैं, that could be another heuristic that you can use. So Manhattan distance in this particular case would be that the desired position of one और उसकी present position of one के दरमियान difference कितना है. So the Manhattan distance in this particular case, so यहाँ पे जहाँ पे 2 है यहाँ पे actually 1 होना चाहिए था,
So this was the desired position. So this is primarily 3 steps away from your desired position. So that would be the Manhattan distance of 1. And then you can simply add the Manhattan distances of each of these tiles. हर tile का अलग-अलग calculate करें and then add them. ठीक है? Because there are 8 tiles, possible tiles. तो Manhattan distance आपका obviously अगर desired position से calculate करेंगे तो goal state का Manhattan distance आपके पास of each tile from its desired position will be 0. So goal state के ऊपर आपके heuristic evaluation जो है वो 0 आ रही है. और obviously you will go for a move जिसमें आपका Manhattan distances जो हैं वो कम हो रहे हैं. Total sum of the Manhattan distances वो reduce हो रही हैं. That means कि ज़्यादा से ज़्यादा टाइल अपनी desired position के ऊपर move कर रही हैं. So as you move towards your goal, the heuristic value reduces in this case. Therefore, this would be a minimizing heuristic. So अब आपके पास multiple heuristics आ गए हैं. So multiple heuristics के case के अंदर, how would you compare the heuristics? ठीक है. Now the question would be कि कौन सा heuristic बेहतर है? क्या heuristic 1 आप simply count कर लें number of misplaced tiles को, क्या ये बेहतर है? या Manhattan distances calculate कर लें, क्या ये बेहतर है? या वो जो उमर ने एग्जांपल दी है, क्या वो heuristic बेहतर है? कौन सा heuristic बेहतर है? heuristic बेहतर होने का मतलब ये है कि कौन सा heuristic ऐसे है जो कि आपको optimal result देता है, especially in case of A star and in case of best first search आपको optimal result आपको वो दे रहा है. तो कौन सा ऐसा heuristic है जो कि इन तीनों heuristics में से सबसे बेहतर heuristic जो है वो count होगा. अच्छा, what do you want as while you are searching through a graph or a tree? आपकी search ज़्यादा effective search वो होगी जिसमें आपको कम से कम nodes को expand करना पड़े और आप अपने goal तक पहुंच जाए. ठीक है, कम से कम नोड्स को वैल्यूएट करना पड़े और अपने नोड्स अपने गोल तक आप पहुंच जाए. फॉर एग्जांपल डेप्थ फर्स्ट सर्च के केस में और ब्रेथ फर्स्ट सर्च के को अगर आप कंपेयर करें तो ब्रेथ फर्स्ट सर्च में आपको बहुत ज़्यादा नोड्स एक्सपैंड करने पड़ते हैं, डेप्थ फर्स्ट सर्च के अंदर आपको कम नोड्स एक्सपैंड करने पड़ते हैं. ठीक है, तो इन अ वे दैट्स एन एडवांटेज ऑफ डेप्थ फर्स्ट सर्च. लेकिन जो दूसरी तरफ उसका डिसएडवांटेज है वो ये है कि यू माइट मिस ऑन द गोल. तो आइडिया ये है यहाँ पे, आइडियल सिचुएशन वो है कि आपको कम से कम नोड्स जो है वो वैल्यूएट करने पड़े और आप फिर भी अपना ऑप्टिमल आप अपना गोल जो है वो अचीव कर लें. जी इब्राहिम, इज देयर अ क्वेश्चन? अच्छा ठीक है, okay. So that's the idea. So what do you actually look at? You look at one thing which is called the average or the effective branching factor. तो आप जब एक heuristic apply करते हैं, you see कि आप कितने nodes को evaluate करके आप अपने goal तक पहुंचे. So if a heuristic gives you an average branching factor, probably you already know what branching factor is. Branching factor is basically the average number of children that you have at a given level of a parent node. So in case of a binary tree, the value of the branching factor is 2. लेकिन अगर आप बाइनरी ट्री नहीं देख रहे और अगर आपके पास बाइनरी ट्री नहीं है, देन यू हैव टू कैलकुलेट द ब्रांचिंग फैक्टर कि एक नोड जो है उसके आगे 3 चिल्ड्रन है और एक और नोड है जिसके आगे 2 चिल्ड्रन है. सो द एवरेज ब्रांचिंग फैक्टर वुड बी 3 + 2 divided by 2 because there are 2 parent nodes in के आप so 5/2 will be 2.5. So 2.5 is the branching factor in this case. So ऐसा heuristic जो कि आपके इफेक्टिव ब्रांचिंग फैक्टर को या नंबर ऑफ ब्रांचिंग द वैल्यू ऑफ द ब्रांचिंग फैक्टर को जो है वो रिड्यूस कर दे, दैट वुड बी अ हेयुरिस्टिक ऑफ अ हायर क्वालिटी. ठीक है, सो हियर इज एन एग्जांपल. H1 हेयुरिस्टिक आपके पास है और H2 हेयुरिस्टिक आपके पास है. सो लेट्स सपोज कि ये 2 हेयुरिस्टिक्स आपके पास है और H1 हेयुरिस्टिक की एवरेज ब्रांचिंग फैक्टर जो है वो 1.79 से शुरू होता है and then the minimum heuristic value branching factor value जो है ना वो यहाँ पे आपके पास 1.33 के करीब आती है. That means कि on average एक parent जो है उसकी जो on average number of children that it expands is 1.33. ठीक है, और whereas heuristic 2 जो है that gives you an average branching factor of the minimum branching factor जो कि इस केस में आपको मिल रहा है heuristic 2 के केस में that is 1.22. तो heuristic 1 बेहतर है या heuristic 2 बेहतर है?
ऑब्वियसली ह्यूरिस्टिक 2 बेहतर है क्योंकि इसका इफेक्टिव ब्रांचिंग फैक्टर जो है दैट इज लेस देन द इफेक्टिव ब्रांचिंग फैक्टर ऑफ H1. दैट मीन्स कि H2 में अगर अप्लाई करता हूँ तो मुझे कम नोड्स एवेल्युएट करने पड़ेंगे या एक्सपेंड करने पड़ेंगे और मैं अपने गोल तक पहुंच जाऊंगा compared with H1. So this is what you call as the heuristic quality. So जब आपके पास multiple heuristics आ जाएं तो then you look at the heuristic quality also. और फिर जिसकी heuristic quality ज़्यादा बेहतर है, जिस heuristic you go for that heuristic. So यहाँ पे 8 puzzle problem के अंदर heuristic आपके पास multiple heuristics हैं. So जो उमर ने heuristic बताया या जो इब्राहिम ने heuristic बताया या जो number of misplaced tiles का heuristic था, इन तीनों में से कौन सा बेहतर है? Obviously एक तरीका इसका ये है कि आप उसकी heuristic quality निकाल लें. That means कि effective branching factor उसका निकाल लें और देख लें कि एक heuristic अप्लाई करने से कितने नोड्स आप इसमें कर. ज़्यादा नोड्स evaluate अगर करने पड़ रहे हैं किसी heuristic की वजह से, then that heuristic quality will be lower compared to the other heuristic. ठीक है. I hope this is clear. Acha, now there is a very important concept also which relates with the optimality of search, and this condition is very important with regards to A star and best first search or heuristic searches. This is what you call as admissibility of heuristics. Admissibility of heuristics जो है, that is another factor that besides the effective branching factor, admissibility is also another factor which has to be taken into consideration. और अगर आपके पास multiple heuristics आ रहे हैं तो a heuristic that is admissible will be preferred over a non admissible heuristic. अच्छा, अब क्वेश्चन ये है कि admissibility क्या है? What do you mean by admissibility? Admissibility का मतलब ये है, okay, so let me just explain you what this admissibility means. Okay, so let me just explain this. So suppose I have my present my start node S, ठीक है, और मेरे पास एक goal node है which is G, and I am somewhere between my start node and the goal node, and let me call this node as node N, right? अब node N की एक heuristic evaluation है, and I have calculated that heuristic evaluation through a heuristic function, and that heuristic function is h of n. And what is this heuristic function telling me? This heuristic function is actually giving me an estimate of my distance or my difference from my goal node. So ये goal node से उसका difference बता रहा है, ठीक है. अच्छा, so this is an estimate. Remember, this value is an estimate. So this is the estimate of the cost. कि आपने present node से goal node तक पहुंचना है, तो an estimate of your cost क्या होगी? तो एक तो आपके पास estimate आ जाता है और दूसरा आपके पास actual cost भी आ सकती है. तो आपने n से जब आप move किए हैं g पे, तो आपकी एक actual cost भी आएगी. Let's call that actual cost as c of n. So that's the actual cost. तो आप actually वहां से move करते हैं तो आपके पास कितनी कॉस्ट आती है. इसकी एग्जांपल मैं आपको यहाँ पे 8 पजल प्रॉब्लम में देता हूँ. तो फर्ज करें मैनहट्टन कॉस्ट 1 की जो थी वो 3 थी मैनहट्टन कॉस्ट. दैट मीन्स कि इसकी डिजायर्ड पोजीशन से इसका जो डिफरेंस है वो 3 है, ठीक है. लेकिन एक्चुअली अगर आप 1 को उसकी डिजायर्ड पोजीशन पे मूव करते हैं तो नंबर ऑफ मूव्स दैट आर रिक्वायर्ड आर दे 3. So the actual number of moves that are required in moving 1 to its desired position, that is what I'll call as C of n. या कुछ जगहों के ऊपर जैसे इन स्लाइड्स के अंदर भी उसको जो एक्चुअल कॉस्ट को जो है वो A स्टार से रिप्रेजेंट किया जाता है, H स्टार से. सो अगर H के साथ स्टार आ जाए दैट वुड रिफर टू द एक्चुअल कॉस्ट, ठीक है. तो आप यहाँ C यूज कर लें या H स्टार यूज कर लें, कोई भी सिंबल यूज कर लें. तो H स्टार is the actual cost of moving a given tile to its desired position, और H जो है without a star, that is the estimate, और estimate comes through a heuristic function, और H star या C जो है that comes by actually solving the problem. तो अगर मैं 1 को इसकी desired position पे ले जाना चाहता हूँ
तो क्या मैं ये 3 स्टेप्स में उसको अब इसकी डिजायर्ड पोजीशन पे ले जा सकता हूँ या नहीं ले जा सकता? व्हाट डू यू थिंक? सो हाउ दिस इज क्लियर? ह्यूरिस्टिक कॉस्ट 1 की क्या थी? 3 थी। मैनहट्टन डिस्टेंस मैं देख रहा हूँ, मैनहट्टन डिस्टेंस जो है वो 1 की, मैनहट्टन डिस्टेंस जो है वो 3 है। इट्स एक्चुअली 3 टाइल्स और 3 प्लेसेस अवे फ्रॉम इट्स डिजायर्ड पोजीशन। सो ये तो मेरे पास 3 जो है ये इसकी मेरे पास आ गई, फर्ज करें इसकी एस्टिमेट वैल्यू। लेकिन सी या एच स्टार जो है क्या वो 3 है या 3 से ज्यादा है या 3 से कम है? जी, इट विल बी डेफिनेटली ग्रेटर इन दिस पर्टिकुलर केस। ठीक है, इस ह्यूरिस्टिक केस के अंदर, क्योंकि आप यू कैन वेरी इजीली सी कि 3 मूव से तो डेफिनेटली ज्यादा आपको मूव्स चाहिए इन ऑर्डर टू मूव टाइल 1 टू इट्स पोजीशन। सो नाउ देयर इज अ कंपैरिजन बिटवीन द एस्टिमेट एंड द एक्चुअल कॉस्ट। अच्छा, सो एस्टिमेट आपके पास कहाँ कहाँ से आया? थ्रू अ ह्यूरिस्टिक। और जो एक्चुअल कॉस्ट आपके पास कहाँ से आई? बाय एक्चुअली सॉल्विंग द प्रॉब्लम। ठीक है, so here is a condition, and that condition is कि age of any node which is an estimate, that should always be less than or equal to h star, या h star कह लें या c कह लें, कोई भी आप इसको नाम दे दें, where h star is the actual cost and h is the heuristic cost. So this is an inequality that should always hold. That means कि आपकी जो heuristic evaluation of a node है, that should always be less than or equal to the actual cost of solving that particular problem, actual cost of reaching your goal. ठीक है, where h star is the actual cost of reaching your goal and h is the heuristic estimate of that cost. So a heuristic will be called an admissible heuristic if that heuristic satisfies this inequality. Okay. If it satisfies this inequality, then that heuristic would be an admissible heuristic. In another way of saying that is that your heuristic cost should never overestimate your actual cost. जी, सो जो क्वेश्चन है वो ये है कि आप सी ऑफ एन कैसे निकालेंगे? सी ऑफ एन आप प्राइमरीली without actually traversing, so you cannot find out C of n without actually traversing, so you will have to find out that through actual traversal, तभी आपको पता चलेगा। फॉर एग्जाम्पल 8 पजल प्रॉब्लम जब तक आप सॉल्व नहीं करेंगे, इस प्रॉब्लम को जब तक मैं सॉल्व नहीं करूंगा उस वक्त तक मैं ये अंदाजा नहीं लगा सकता कि मेरी सी क्या है, सी वैल्यू। ठीक है, so you will actually have to solve this or traverse this before you actually compare this. ठीक है, और admissibility की condition ऐसी है which should be satisfied, और उसके लिए you will have to use some science in order to also find out, क्योंकि हर केस के अंदर आप सॉल्व नहीं कर सकेंगे ना। तो मिसाल के तौर पे फ्रॉम साइंस यू नो कि स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस इज ऑलवेज लेस or equal to the actual distance. It can never exceed the actual distance. ठीक है, तो जब मैं straight line heuristic यूज कर रहा हूँ, so the straight line heuristic would definitely be admissible, क्योंकि science actually tells me this. ठीक है, तो ज्यादा कोशिश ये होनी चाहिए कि आप ऐसे heuristics define करें which would basically which you can prove कि they are admissible. ठीक है, अब इस केस के अंदर 8 पजल प्रॉब्लम के अंदर भी आपके पास, लेट्स से मैं नंबर ऑफ मिसप्लेस्ड टाइल्स को देखता हूँ, 8 है इस स्टेट के अंदर, और गोल तक पहुंचने के लिए क्या मुझे 8 मूव्स चाहिए? ऑब्वियसली नहीं, 8 मूव्स के अंदर मैं कभी भी नहीं पहुंच सकता।
एंड देयर इज एन ऑब्वियस रीजन फॉर दैट कि हर टाइल को अगर मैं डायरेक्ट स्विच कर दूं, फर्ज करो 8 को डायरेक्टली उठा के उसकी डिजायर्ड पोजीशन के ऊपर रख दूं, तो तब ये 8 मूव्स बनती हैं, अदरवाइज ये 8 मूव से ज्यादा ही होंगी, राइट? So H1, which is the number of misplaced tiles, is definitely heuristic, which is admissible. ठीक है, वो एडमिसिबल तो है, लेकिन क्या उसकी क्वालिटी अच्छी है या नहीं अच्छी, वो क्वालिटी आप उसके इफेक्टिव ब्रांचिंग फैक्टर से निकाल सकते हैं. सो इफ देयर आर मोर देन वन हेuristics दैट आर एडमिसिबल, तो फिर आप क्वालिटी के ऊपर डिसाइड करेंगे कौन सा हेuriस्टिक आप यूज करें. सो H2, सम ऑफ द डिस्टेंसेस ऑफ द टाइल, जो कि मैनहट्टन डिस्टेंस की बात कर रहे थे इब्राहिम, तो क्या मैनहट्टन डिस्टेंस वाला जो है वो एडमिसिबल है या नहीं है? ठीक है, सो दैट would that is something that you'll have to test. ठीक है, अंडर डिफरेंट सिनेरियो. सो 8 पजल की बजाय अगर आप इस प्रॉब्लम को ज़रा रिड्यूस कर लें या रिलैक्स कर लें, और रिलैक्स प्रॉब्लम के हवाले से अगर आप प्रॉब्लम को रिलैक्स कर देते हैं, ठीक है, तो फिर आप एडमिसिबल हेuristics फाइंड आउट कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल रिलैक्स प्रॉब्लम का ये है कि इफ आई अलाउ यू टू डायरेक्टली स्विच द टाइल्स, फर्ज करें 8 को मैं 1 से स्विच कर सकता, तो 8 इमीडिएटली अपनी डिजायर्ड पोजीशन के ऊपर आ जाएगा, लेकिन दैट्स एक्चुअली अ रिलैक्स प्रॉब्लम, मैंने प्रॉब्लम को रिलैक्स कर दिया. ठीक है, सो अंडर रिलैक्सेशन you get a value, but when you will put some conditions on top of it, and if you remove that relaxation, then the value, the actual cost would definitely be higher, क्योंकि अब आपके पास conditions हैं and you will have to satisfy those conditions, it's not relaxed anymore. ठीक है, सो एक तरीका एडमिसिबल हेuristics ये फाइंड आउट करने का है कि एडमिसिबल हेuriस्टिक का वो ये है कि क्या ये एडमिसिबल हेuriस्टिक जो है वो आपने कैलकुलेट किया है अंडर अंडर सम रिलैक्सेशन और नॉट. और अगर आपने हेuriस्टिक अंडर सम रिलैक्सेशन आइडेंटिफाई किया है, तो देन दैट वुड डेफिनेटली बी एडमिसिबल. ठीक है, will the inequality flip if we use a maximizing heuristic? तो क्या maximizing heuristic के अंदर inequality जो है वो switch कर जाती है? I don't think so कि ऐसा शायद होगा, क्योंकि ओवर एस्टिमेशन की हम बात कर रहे हैं ना, सो एक्चुअल कॉस्ट के साथ उसको कंपेयर कर रहे हैं. ठीक है, सो टिक टैक टो के अंदर जैसे हमने एग्जांपल के अंदर 4 विनिंग लाइंस आपके पास आई, लेकिन एक्चुअल विनिंग पोजीशन तक जाने के लिए आपको क्या 4 मूव्स चाहिए. ठीक है, उसमें क्योंकि 2 प्लेयर्स इन्वॉल्व हैं, तो ऑब्वियसली 4 मूव्स तो नहीं चाहिए होंगी, आपको 4 मूव से ज़्यादा मूव्स ही चाहिए होंगी, क्योंकि आपकी मूव्स भी हैं और फिर आपके ओपोनेंट की मूव्स भी हैं. ठीक है, तो एक्चुअल कॉस्ट के साथ उसका कंपैरिजन जो है वो आपको करना पड़ेगा. द इनइक्वालिटी विल इन माय व्यू वुड रिमेन ये, क्योंकि एच स्टार जो है या सी जो है वो आपकी एक्चुअल कॉस्ट से आपने कंपेयर कर रहे हैं. वो आप ये नहीं देख रहे कि इस वक्त आप जो मूव सिलेक्शन जो है वो मिनिमाइजिंग ह्यूरिस्टिक की बेस पे है या मैक्सिमाइजिंग ह्यूरिस्टिक की बेस पे. सो मिनिमाइजिंग मैक्सिमाइजिंग ह्यूरिस्टिक जो है वो मूव सिलेक्शन में यूज हो रहा है. ठीक है, उसका एक्चुअल कॉस्ट के साथ जो है वो शायद बहुत ज़्यादा डायरेक्ट रिलेशन मेरे ख्याल में नहीं है. दैट्स व्हाट माय व्यू इज. तो इब्राहिम, जो आपका क्वेश्चन है, आई थिंक ऐसा शायद नहीं होगा. ठीक है, ओके. सो एडमिसिबल ह्यूरिस्टिक की डेफिनेशन आपके पास क्लियर होनी चाहिए. इट शुड नेवर ओवर एस्टिमेट. सो एडमिसिबल ह्यूरिस्टिक का मतलब क्या होगा कि योर ह्यूरिस्टिक शुड नेवर ओवर एस्टिमेट योर कॉस्ट. अच्छा, उसका नुकसान क्या है? उसका नुकसान ये है कि लेट्स से कि ये आपके पास एक सिनेरियो है जिसमें आपके गोल नोड जो है वो जी है. ठीक है, सो दिस इज योर गोल नोड, और आपके पास ये जो वैल्यूज आ रही हैं, दीज आर दी ह्यूरिस्टिक वैल्यूएशंस. और अगर कोई नोड की ह्यूरिस्टिक वैल्यूएशन ओवर एस्टिमेट हो जाती है, ठीक है, तो प्रैक्टिकली आप ये देखें कि आप ये जो नोड है जिसकी ह्यूरिस्टिक वैल्यूएशन मैंने 40 दी है, ये वैल्यू जो है आइडियली, बिकॉज इट्स आइडियली दिस हैज टू बी दिस शुड बी वेरी लो.
कंपेयर टू दिस ह्यूरिस्टिक एवेल्युएशन। रीज़न उसकी क्या है कि ये नोड आपको गोल से दूर लेके जा रहा है, तो इसकी ह्यूरिस्टिक कॉस्ट जो है वो ज़्यादा होनी चाहिए। ठीक है, मिनिमाइजिंग ह्यूरिस्टिक के केस में बात कर रहा हूँ, और ये आपको गोल की तरफ लेके जा रहा है, तो यहाँ पे कॉस्ट इसकी कम होनी चाहिए, ह्यूरिस्टिक कॉस्ट। आपका ह्यूरिस्टिक जो है वो ओवर एस्टिमेट कर रहा है, दैट मीन्स कि इसकी कॉस्ट तो कम होनी चाहिए, लेकिन आपका ह्यूरिस्टिक ज़्यादा कॉस्ट बता रहा है। तो फर्ज करें ये आपका ह्यूरिस्टिक आपको कॉस्ट यहाँ पे 40 बता रहा है, दिस इज जस्ट अ वैल्यू व्हिच इज टेकन टू एक्सप्लेन द कांसेप्ट बेस्ड ऑन सम ह्यूरिस्टिक। सो ये अगर आपको 40 बता रहा है और इस नोड की आपको 5 बता रहा है, तो स्ट्रेट अवे आप देख सकते हैं कि दिस ह्यूरिस्टिक इज नॉट अ करेक्ट ह्यूरिस्टिक। और इस ओवर एस्टिमेशन की वजह से आप हमेशा अपनी सर्च जो है वो इस एरिया में ढूंढ रहे होंगे, इस तरफ आप जाएंगे नहीं, क्योंकि यहाँ पे हमेशा ओवर एस्टिमेशन आपके पास आ रही है। तो ओवर एस्टिमेशन में टेक यू अवे फ्रॉम योर गोल, you may not be able to reach your goal anymore अगर आप overestimation कर रहे हैं। So that's why overestimation is a bad idea. तो heuristic को admissible होना चाहिए, that means कि जो actual cost अगर आप इस पाथ के ऊपर मूव कर रहे होते तो 40 से बहुत कम होती। ठीक है, तो टोटल पाथ कॉस्ट आपके पास जो यहाँ पे आ रही होती है, heuristic कॉस्ट जो इस पाथ के ऊपर आ रही होती, वो ऑब्वियसली कम होनी चाहिए थी, लेकिन यहाँ पे वो ओवर एस्टिमेशन की वजह से आप अपने गोल तक नहीं पहुँच पा रहे। ओके, सो ओवर एस्टिमेशन का नुकसान ये है कि योर ए स्टार सर्च डज नॉट रिमेन अ कंप्लीट सर्च। ठीक है, वो कंप्लीट नहीं रहती। तो ए स्टार सर्च के लिए द कंडीशन फॉर ए स्टार सर्च टू बी कंप्लीट इज योर ह्यूरिस्टिक हैज टू बी एन एडमिसिबल ह्यूरिस्टिक। और एडमिसिबल ह्यूरिस्टिक की डेफिनेशन मैंने आपको बता दी है। एडमिसिबल ह्यूरिस्टिक इज द वन which never overestimates the actual cost through a heuristic function। तो आपका heuristic function ऐसा होना चाहिए जो कि ओवर एस्टिमेशन ना कर रहा हो। अच्छा, एक एग्जांपल इसकी मैं आपको देता हूँ। सो इस केस के अंदर 8 पजल प्रॉब्लम के अंदर H1 और H2 दोनों एडमिसिबल। H1 is the number of misplaced tiles और H2 है the sum of the distances of the tile from the goal position Manhattan distance की जो एग्जांपल, so both of them are admissible heuristics। और मैनहट्टन डिस्टेंस की एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे लूँ, तो इफ दिस इज योर से स्टार्ट पोजीशन एंड दिस इज योर गोल सिनेरियो, तो इस केस के अंदर मैनहट्टन डिस्टेंस अगर आप देखें तो वो 4 आता है। तो एक्चुअल मूव्स जो आपको करनी है इन ऑर्डर टू मूव फ्रॉम योर स्टार्ट टू योर गोल, 1 2 3 4 5 6, so there are 6 moves required in order to actually move these tiles, whereas Manhattan distance आपको value 4 दे रहा था। So the value of the heuristic evaluation is less than the actual moves, therefore this heuristic Manhattan distance heuristic is admissible heuristic। ठीक है, अच्छा, let me just अच्छा, यहाँ पे let's take this example and this would be the last example before we leave today। यहाँ पे एक heuristic H1 दिया हुआ है और heuristic H2 दिया हुआ है, which of the two is admissible? क्या H1 admissible है और H2 admissible है? दोनों में से कौन सा admissible है? और यहाँ पे आपको जो ग्राफ के अंदर जो values दी हुई हैं, these are the actual costs। ठीक है, आपके ख्याल में H1 heuristic जो है वो एडमिसिबल है या H2 ह्यूरिस्टिक एडमिसिबल है? ये ह्यूरिस्टिक्स क्या हैं? एट प्रेजेंट लेट्स नॉट बी कंसर्न्ड अबाउट दीस टू ह्यूरिस्टिक्स कि ये एक्चुअली है क्या, लेकिन समवन गेव ह्यूरिस्टिक 1 एंड ह्यूरिस्टिक 2 एंड यू जस्ट वांट टू नो कि क्या ये एडमिसिबल ह्यूरिस्टिक है या नहीं है। फर्स्ट करें H1 के बारे में आप क्या कहते हैं? हाउ डू यू कैलकुलेट कि ये एडमिसिबल है या नहीं? सो लेट्स quickly go over it because we don't have enough time to actually complete this। फर्स्ट करें heuristic evaluation of A जो है that is 200। ठीक है, तो इसकी heuristic evaluation आपके पास 200 आ, और heuristic evaluation क्या है with respect to goal। so क्या अगर मैं A से F तक, where F is my goal, अगर A से मैं F तक जाता हूँ, so क्या एक्चुअल कॉस्ट जो मेरे पास A से F तक जाने की है
क्या वो 200 से कम है या ज़्यादा है? लेट्स से एक पॉसिबिलिटी ये है कि आप ए से ई पे आएँ और ई से एफ पे चले जाएं। सो टोटल कॉस्ट आपकी क्या आ जाएगी? 135 प्लस 80। ठीक है, 135 प्लस 80, सो that is your 215. So 215 is your actual cost, whereas heuristic cost of H is 200. So एक पाथ से तो आपके पास ये कॉस्ट आ गई। ठीक है, सिमिलरली एक और पाथ आपके पास ये है, आप इस तरीके से भी एफ तक पहुंच सकते हैं ए से, और एक एक ये है कि आप इस तरीके से भी पहुंच सकते हैं। तो अगर मैं इस रूट से पहुंचता हूं तो दिस वुड बी 69 प्लस 75 प्लस 165, और अगर मैं डी से डायरेक्टली एफ तक आता हूँ फ्रॉम ए, तो दिस वुड बी 69 प्लस 75 प्लस 180। सो आपकी जो ह्यूरिस्टिक एवेल्युएशन ऑफ ए है, दैट ह्यूरिस्टिक एवेल्युएशन इज ऑलवेज लेस देन द एक्चुअल कॉस्ट, चाहे आप जिस मर्जी पाथ से जाएं। ठीक है, सो इस तरह से आप बाकी नोड्स के साथ भी कैलकुलेट कर सकते हैं। सो यहाँ पे किसी एक नोड के लिए भी अगर आपकी ह्यूरिस्टिक कॉस्ट जो है दैट इज लेस देन, इसे ह्यूरिस्टिक कॉस्ट इज ग्रेटर देन ये द एक्चुअल कॉस्ट, तो आपका ह्यूरिस्टिक नॉन एडमिसिबल हो जाएगा। जैसे ज़ारा ने अभी बताया कि H2 जो है दैट गिव्स 270 which is greater than the actual cost which is 255 from B. So B से अगर मैं F तक जाता हूँ तो मेरे पास दो पाथ्स हैं, बल्कि तीन पाथ्स हैं। B से मैं A पे जाऊँ, फिर E पे जाऊँ, F पे जाऊँ, B से D और फिर E और फिर F, और B से D और F। तो इसमें से आपने शॉर्टेस्ट देखना है, दैट मीन्स दी लोएस्ट कॉस्ट पाथ जो है वो आपने देखना है, और उसको ह्यूरिस्टिक के साथ आप कंपेयर कर लें। सो H2 in this case will not be admissible. The reason is कि actual cost उसकी जो है वो कम आ रही है compared to the heuristic cost. ठीक है, सो सिमिलरली आई विल अपलोड द स्लाइड्स, और इसके अंदर कुछ और एग्जांपल्स भी हैं। यू शुड गो थ्रू दोज एग्जांपल्स, और एडमिसिबिलिटी वाली जो कंडीशन है उसको अच्छे तरीके से आप समझ लें, क्योंकि अगर आप एडमिसिबल ह्यूरिस्टिक्स डिफाइन नहीं करेंगे, योर ए स्टार विल नॉट वर्क। द वर्किंग कंडीशन फॉर ए स्टार इज कि इट हैज टू बी एडमिसिबल। ठीक है जी, दैट्स एंड्स आवर डिस्कशन टुडे।